The question is, a double convex lens has focal length of 25 centimeters. The radius of curvature of one of the surface is double of the other. Find the smaller radii if refractive index of material of the lens is 1.5. तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक कॉन्वेक्स लेंस. Let us say radius of curvature of this surface is R1. Second surface is radius of curvature R2. And incident ray direction, let us take it from left towards right direction. So this is the direction of the incident ray. Now it is given the radius of curvature of one of the surfaces double of the other. So let us suppose R1 is double of the other, means R1 is 2 times of R2, and the focal length is given as 25 centimeter because it is a convex lens, so it will be with positive sign. 25 centimeter is the focal length of the lens, and refractive index is given as 1.5, so mu is 1.5. We have to find the smaller radii of curvature. Smaller one is the R2. R2 is the smaller radii of curvature. So let us write down the lens maker formula. 1 upon f (1 minus 1 upon R2 minus 1 upon R2). This is our lens maker formula. Now what is given to you? F is given 25 centimeters, so this will be 1 upon 25. Mu is 1.5, so 1.5 minus 1. R1 we have taken as 2 times of R2, so 1 upon R1 will be 1 upon 2 R2 minus 1 upon R2. अब this R2 will be negative sign. Why? Because the incident ray is coming in from left to right direction, and radius of curvature, if I measure for this radius of curvature, I will measure from starting from the pole of this R2 radius of curvature going against the incident direction, incident ray direction. So we are going in the opposite direction of the incident ray when I am measuring R2. So I will put a negative sign. This is by sign convention rules. So this will be minus R2. अब इसको हम सॉल्व करेंगे R2 के लिए. 1 upon 25, 1.5 minus 1 will be 0.5, 0.5, 1 upon 2 R2, negative negative will become positive, so plus 1 upon R2, 1 upon 25, 0.5. इसका हम एलसीएम ले लेंगे, जैसा हम एडिशन सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन करते हैं. 2R2 and R2, the LCM will be 2R2, and numerator में will be 1 plus 2. So next step will be 1 upon 25, 0.5 into 3 upon 2R2. so यहाँ से हमको R2 मिलेगा, क्रॉस कर लेते हैं इसको. दिस विल बी 0.5 इंटू 3 इंटू 25 अपॉन 2. दिस इज 75 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 2. इसको मल्टीप्लाई करके इफ आई डिवाइड बाय 2 आई विल गेट R2 एज 18.75 सेंटीमीटर्स. ये हमारा आ गया R2. आपको क्वेश्चन में पूछा था स्मॉलर वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो दिस इज़ फॉर R2 विच इज़ द स्मॉलर रेडियस ऑफ कर्वेचर. दिस इज़ योर आंसर. इसमें अगर आपको R1 पूछा गया हो तो आप R1 को भी निकाल सकते हैं. R1 इज़ 2 इंटू R2, सो R1 इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू R2. पुट द वैल्यू 2 इंटू 18.75
और इसका आंसर आपको मिल जाएगा 37.5, यहाँ लिख देते हैं 37.5 सेंटीमीटर। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ R1। लेकिन क्वेश्चन में आपको R2 पूछा गया है, तो R2 हमारा हो जाएगा 18.75। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन।